Hello friends, this is my next program. Determine whether a number is palindrome or not. ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप लेफ्ट से एंड राइट से देखेंगे तो आपको बोथ साइड से ये सेम दिखेंगे. डेट इज योर पैलिंड्रोम नंबर. तो हम इसको निकालेंगे. सपोज 343 को पैलिंड्रोम कैसे निकालेंगे, तो आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे. एक्सपेंड फॉर्म होती है, सबसे पहले हमने लिया 3, तो 3 के बाद कितना नंबर है 2, तो 3 के बाद 2 नंबर है तो 2 0. अब नेक्स्ट हमने लिया है 4, 4 के बाद कितना नंबर है 1, तो डेट इज 0 प्लस लास्ट नंबर इज योर 3, सो हियर यू राइट 3. अब आप इसको जब प्लस करके देखेंगे तो आपका क्या आएगा, सेम नंबर आएगा 3 4 3. ओके, तो डेट इज योर पैलिंड्रोम नंबर. बट अब आप इस प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो कोड में इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे. सो हियर दिस इज कोडिंग ऑफ दिस योर प्रोग्राम. हियर आई एम आरईबी रिवर्स, दैट इज योर रिवर्स. रिवर्स हमने नीचे वाले डिफाइन करी 0, ये रिवर्स इसलिए लिया है हमने बिकॉज हमें जब हम एंटर करवा रहे हैं 343 वैल्यू तो हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिवर्स लिया है. सेम कंडीशन हम व्हाइल लूप की हेल्प से करेंगे. हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी जो वैल्यू है 0 से बड़ी हो. हमने फर्स्ट लाइन में सेम आपने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम में आर्मस्ट्रांग नंबर में रिमाइंडर फाइंड करते थे तो आपने यहाँ पे सेम रिमाइंडर निकालना है. देन उसके बाद हम लास्ट प्रोग्राम में हमने आर्मस्ट्रांग में हमने सम का यूज किया था, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे रिवर्स का बिकॉज हमें क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में हमें वैल्यू, उस रिमाइंडर की वैल्यू हमारी इंक्रीज होकर देन नेक्स्ट नंबर में सम हो जाएगी. सपोज यहाँ पे आपका जो रिवर्स है, रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी रिवर्स योर इनिशियल वैल्यू इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 3. फर्स्ट टाइम पे रिमाइंडर आएगा आपका 3, 3 is your remainder of this your number, remainder 3 of this number. Okay, next, so now your number value is 34. Again your condition is 2, remainder is 4. Okay, now reverse value is 0 multiply 10 plus 3, that means reverse value is 3, so 3 means 3 multiplied by 10. Okay, plus now reverse is, for this case reverse is 34. Okay, next now num value is changed again, so for this condition your remainder will be 3. Next, for second condition reverse value will be 34 multiply by 10 plus remainder is now 3, so answer is 3 4 3. Okay, so this is your output. Temp value will be equal to your reverse value, that is your condition. Okay, we have three conditions for first, second and third. So 3 4 3, let's expand 8 plus first. So this is expand form of my number 340 plus 3, that means 343. So here we have first condition. In first condition my reverse is 3, so that is 3. Okay, and now your number will turn 34, and in second place remainder, in second place your reverse number is now 34, but we have to here 340. So how is it? So but here we have a number 340. So in third condition we will multiply 34 to 10, that is 340 plus 3. So this is my program. Here we have three conditions 1 2 and 3. So now let's move on your Visual Studio Code and let's the logic of this program. Here we have a logic of this program, same, nothing will be changed, only change the value of your reverse. Okay, so here we have a function, input function for entering your number. Temp value will be stored for your num, reverse initial value defined 0. Initial value reverse defined 0 because your initial value will be 0. You have to receive first your remainder. ओके, फर्स्ट कंडीशन नाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रोग्राम चलेगा 343 के लिए कंडीशन, यहाँ पे ये आपको रिमाइंडर निकाल के देगा. तो आपको जब रिमाइंडर निकाल के देगा तो यहाँ पे आपका 3 आएगा. 3 निकलने के बाद आप नेक्स्ट लाइन जब एंटर करेंगे तो हमें क्या करना है, रिवर्स की वैल्यू 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस हेयर रिमाइंडर वैल्यू इज 3. ओके, इन नेक्स्ट लाइन नम डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे नम 343 को डिवाइड करेगा. डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बचेगा वो 34 होगा. ओके, फिर दोबारा ये लूप ऊपर जाएगा, ये चेक करेगा कि जो इसकी नम की वैल्यू है चेंज हो चुकी है, तो दैट इज 34. अगेन कंडीशन इज ट्रू. So next move on next line. Here we have a remainder is 4. Remainder of 34. Remainder of 34 is 4. Okay. So condition. Next condition. Reverse. Now reverse value will change. Initial reverse value 0, but in first condition reverse value is now become 3. So 3 multiplied by 10 plus remainder value is 4. So answer is 34. Okay. And in next line here we have a, so here we have a number 34. So your number will be get 3. Condition is true. Again condition is true for 3. In next line remainder nothing, member is written 3. So in next line now say for second condition reverse value will be 34 multiplied by 10 plus now remainder value is again 3. Okay, so here 0, condition is false. So in next line we have defined if temp value is 343, now our reverse value is also 343, so that means your condition is true. So if your condition is true the number is Armstrong, otherwise number is not Armstrong. Thank you.